evening, sir. Yes, sir. Good evening. How are you? I am fine, sir. Happy Ram Navami. Same to you. Thank you. Yes. And happy Dashera to you Thank you, sir. in advance. Ah, In advance or just few hours later, ah, it is next day. So yeah, I must wish you happy Dashera now. yeah. Thank you, sir. Okay, so so what have you done? I think there was a story Hmm. I gave you to write I have, and to make some questions from this story. yeah. Okay. I have written firstly about the stadium. Why I do not want to go to stadium to see a cricket match. So first, I would like to. I think you told me that last time. No, Yeah. that the About. stadium. Yeah, but some points was missing at that time. Some of the points were missing. Okay, some of the points were missing. Okay. Were missing, yeah. Okay. So now you want to speak it again. Hmm. Okay, no problem. Speak. Because in stadium they are not allowed to carry anything with us. That's why we need to buy water bottles from the shop inside the stadium. As you should say, because in stadium, as we are not allowed, not they, we, as we are not allowed to carry anything with us inside the stadium. That's why we need to buy water bottles from the stall inside the stadium. They are not shop, they are stalls. Okay. So as we are not allowed to carry anything inside, anything with us, that's why we need to buy water bottles from the stall All inside the stadium. Okay. Which may or may not be near to me. मतलब हो सकता है या नहीं भी हो सकता है पास मेरे. Nearby me. Near by me. आस-पास. If not, then I need to walk there and buy it. I do not like to visit crowd places. Crowded. Crowded, है ना? Crowded. Crowded. Okay. Crowded places. I don't like to visit crowded place. Okay. Crowded places. Places होगा ना? Yes. And much noise. I do not like much noise means. In that noise, that important movement getting missed. Important movements get missed. Get missed. Get missed, yeah, are missed. Okay. In a stadium, you cannot watch clearly what do happened in the ground. The we don't use you. In a stadium, comma. In a stadium, we cannot watch the activities of the ground clearly. Okay. In the rainy season, it is very difficult to go to watch match from inside the stadium. Rainy season, it is very difficult to go to watch a match
in the stadium. In the stadium. From inside, you have used two prepositions. No need. To watch any match in the stadium. In spite of going to stadium, I want to watch my match in my home. Nest with my family and friends. Have cold drinks with us and chips, wafers, and in the cool, calm and peace. In cool and calm and peace atmosphere. Atmosphere. Without exertion, inexpensive, and without going anywhere. Okay. Next, I have written the question from the story, what you told. How much sun King had? Oh, Without did you cannot make. How much nahi, how many. so many is used for the means निर्जीव person के लिए क्या बोलते हैं उसको? For the things actually. ऐसा होता है क्या? Living thing, non-living thing. You are talking about living thing, non-living thing. Non-living thing. But how many means countables. Whether they are living or non-living, I have no problem. Okay. How many for countable nouns, जिनको गिन सकते हैं. How much is for uncountable, जिनको गिन नहीं सकते. अब आप कहोगे कि how much money हम कहते हैं. You go to a shop, you buy something and you ask how much should I pay. अब आप कहोगे पैसा तो गिन सकते हैं, तो बट बोला वहां पे हाउ मच ही जाता है. हाउ मच मनी डू आई हैव टू पे. लेकिन यहाँ पे हाउ मच नहीं होगा, यहाँ पे होगा हाउ मैनी. अच्छा, वो एनी के लिए यूज होता है क्या? एनी के लिए लिविंग नॉन लिविंग वाला यूज होता है क्या? नहीं, ऐसा कोई वो नहीं है. अच्छा, ये कोई रूल नहीं है. एनीबडी कैन गो कहते नहीं है क्या? हाँ. तो फिर एनी बडी के साथ लगा ही रहे हो ना आप. एनी बडी टेबल को तो कह नहीं रहे आप, लेकिन टेबल है तो भी कह सकते हो. आई नीड एनी ऑफ द टेबल टुडे. कोई एक टेबल तो आज मुझे चाहिए, तो वहां लगा दिया. और anyone can go there, आदमी के लिए लगा दिया. तो how many sons king had? Did the king have? The king had. Without did नहीं बनेगा. क्वेश्चन है how many sons did the king have? कितने लड़के राजा के थे. Okay. Why king was worrying about his children? No. Why was? Why was अब king worrying नहीं, king worried. Yes. Why was king worried? Actually, I was confused. मतलब मैं confused था इसमें कि king worrying लगेगा कि worried लगेगा, क्या हो जाते हैं हम confused ऐसी चीजों में, क्योंकि worried यहाँ पे क्या बन गया, adjective बन गया. Worried जैसे आपको today I tell you a very important and very nice point. That some of the verbs like I say break,
आपने कहा ब्रेक, ब्रेक मीन्स तोड़ना, सॉरी स्पेलिंग गलत लिख दी, BREAK, ब्रेक, हाँ, ब्रेक मीन्स तोड़ना. If you write the second form, that is broke. A third form is broken. These are the three forms of this verb: break, broke, broken. It is verb. भाई broken क्या है? verb है. लेकिन broken, third form of the verb, may be an adjective. कई बार वर्ब की थर्ड फॉर्म एक एडजेक्टिव भी हो सकती है, और एडजेक्टिव मीन्स द क्वालिटी ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन. तो कई बार थर्ड फॉर्म वर्ब की वो एडजेक्टिव की तरह यूज होती है. जैसे एग्जाम्पल, मैंने कहा डोंट sit on this chair. ठीक है, it is broken. अब क्या मतलब हुआ? ये टूटी हुई है. हाँ, अब ब्रोकन यहाँ पे थर्ड फॉर्म नहीं है, ये एडजेक्टिव बन गया. टूटा हुआ, क्वालिटी हो गई चेयर की कैसी? टूटी हुई. फटा हुआ कुर्ता, जबकि है क्या? टीयर, टोर, टॉर्न. टीयर माने फाड़ना, और टोर माने फाड़ा, और टॉर्न माने थर्ड फॉर्म. लेकिन टॉर्न थर्ड फॉर्म तो है, बट इट हैज बिकम एन एडजेक्टिव ऑल्सो. मैंने कहा व्हाई आर यू पुटिंग ऑन दैट टॉर्न शर्ट? भैया फटी हुई शर्ट क्यों पहन रहे हो? तो थर्ड फॉर्म बन गई. इसी तरह वरी, अब वरी वर्ब तो है, वरी, वरीड, वरीड, डोंट वरी, चिंता मत करो, तो वर्ब है. लेकिन वरीड मतलब चिंतित, तो वो एडजेक्टिव हो गया. Why are you worried? अब देखो हो गया कि नहीं? Why are you worried? Why are you worried? क्यों चिंतित हो भाई? अब worried यहाँ पे वर्ब नहीं है, एडजेक्टिव बन गई. क्यों चिंतित हो? Why are you worried? I am not worried. ये है, इसलिए वहां पर why king was worrying, राजा चिंतित क्यों हो रहा था? नहीं, चिंतित क्यों था? क्योंकि worrying कभी इसमें होता नहीं है, हमेशा एक एडजेक्टिव की तरह यूज होता है. तो why was king worried for his sons? about नहीं, for उनके लिए क्यों चिंतित था? लाइक what he is realizing when he was sick. When he was sick. Realized होगा. What he has realized when he was sick. what he has Realized when he was has sick. नहीं आएगा भाई, क्योंकि ये पास्ट है. He had. तो had भी नहीं आएगा. what क्या कर चुका था? मतलब रियलाइज कर चुका था वो क्या? ये उसको मतलब उसको क्या महसूस हो रहा था? आप ये लिखना चाह रहे हैं. what he was realizing when he was sick. what he realized हो जाएगा फिर. नहीं, what he realized. नहीं, तो आप इसको लिखो ऐसे ही मत लिखो. उसने क्या सोचा, उसके दिमाग में क्या है जब वो बीमार था?
बीमार था। तो what did he realize? What did he realize when he was sick? तो उसको क्या समझ में आया, क्या सोचा उसने, क्या दिमाग में आया? What he did to teach lesson to their sons. Or what he did, no, what lesson, सुनो समझो, अब what he did to teach lesson, no, what lesson, कौन सा लेसन वो उनको सिखाना चाहता था? तो what lesson did he want to teach his sons? Simple. आया समझ में? Don't worry, practice makes a man perfect. What lesson he did? हाँ, तो जब भी आया कौन सा पाठ वो उनको सिखाना चाहता था, तो what lesson did he want to teach his sons, not their sons, his sons. अपने लड़कों को कौन सा पाठ वो पढ़ाना चाहता था या क्या सबक सिखाना चाहता था? Why King's sons, why was King's sons not able to break the stick individually? अब क्या इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं अपन? इंडिविजुअली क्या, स्टिक की आदमी? इट्स नॉट क्लियर. Why king was, आप कहना चाहते हो कि किंग के लड़के क्यों नहीं तोड़ पाए स्टिक्स को, स्टिक के को? Why was King's sons individually was not able to break the stick? देखो सिंपल बनाओ, इंडिविजुअली को उठा के रख दो अभी कहीं और, ठीक है, उसको बाद में यूज करेंगे जरूरत पड़ेगी तो, ठीक है. पहले सिंपल बनाओ. कैसे बनेगा सिंपल? कि राजा के लड़के उसको क्यों नहीं तोड़ पाए बंडल को? तोड़ सके तो अब देखो कितने लड़के? 3. तो वाई वर, वॉर्स तो होगा नहीं, 3 लड़के, वाई वर. अब कौन सब्जेक्ट? वाई वर किंग सन. ठीक है, वाई वर किंग सन, ठीक है, एबल टू. लेकिन यहाँ पे क्यों नहीं तोड़ पाए? तो वाई वरंट करना पड़ेगा, है ना? तो वाई वरंट किंग सन एबल टू. अब हमेशा ध्यान रखो, 2 के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है, सेकंड नहीं. तो why weren't king's son able to break the bundle of sticks? अब आपको इंडिविजुअली लगाना है, तो अब जरूरत ही नहीं है इंडिविजुअली. Why weren't the king's son able to break the bundle? अब लगाना चाहो लगा भी सकते हो इंडिविजुअली, क्योंकि अब लड़कों की बात हो रही है इंडिविजुअली. अपने आप में क्यों नहीं तोड़ पाए उसको? अब व्हाट लेसन वी गेट, लो हमें क्वेश्चन चाहिए, हमने इस स्टोरी से क्या सीखा? व्हाट डिड और व्हाट लेसन डिड वी लर्न फ्रॉम द स्टोरी? क्लियर? What lesson did we learn from the story? इस कहानी से हमने क्या सीखा? क्या सीखा? अब इसके सारे आंसर देता हूँ, ठीक है? अब how many
How many sons did the king have? The king had 3 sons. Why was king worried for his sons? He was worried because they used to quarrel with one another. What did he realize when he was sick? He realized that his death was near and he wanted to see his sons together. So he decided to teach them a lesson. It, what did he? What lesson? What did he? He taught them the unity always has strength. What lesson did we get from this story or learn? That unity always has strength. We should be united. Simple. Clear? Okay. Sir, I have written some more things about present perfect tense. Okay. Sorry. Okay. Present perfect tense you have written. Question.